Good morning, 10th standard. Today we will start the chapter 1 of chemistry, and that is chemical reaction and equation. As its name suggests that in this chapter we are talking about that whatever the chemical changes are taking place in our surrounding, for example, conversion of milk into a curd or rusting of iron, or the when we cut the apple and put it for some time in open, then its color gets darkened, or its color gets brown. Then why this is happening? All of these are the chemical changes, and in this chapter we are going to discuss in detail about these chemical processes, which we will study with the help of chemical reactions, and how we can present these chemical processes in um, a mathematical manner, or we can say in the convenient manner, so that we will discuss. Now, if we are talking about that, what are the chemical reactions? So a chemical reaction is basically a process. ठीक है, ये क्या होता है बच्चे? एक प्रोसेस होता है जहां पर कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं और कुछ नया बनाती हैं. It may be कि उनकी conversion of reactant into a product. It may be under the influence of a catalyst, or it may be a simple one, chemical reaction. तो जब एक रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हुए और कुछ न्यू सब्सटेंस बना, then such a changes, such a reactions are known as a chemical reactions. ठीक है. And generally to make it convenient, क्योंकि हर एक चीज को हम पूरी पूरी स्टेटमेंट में तो नहीं दे सकते, तो उसको इजी बनाने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है बेटा, किसी भी प्रोसेस में क्या चीजें, क्या सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या नया बन रहा है, उसको हम एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, इन विच shows a change of reactant to product and true and जिसमें कि reactants जो होते हैं that is written on left hand side, and अगर एक से ज्यादा है obviously तो it is there is a plus sign in between them, whereas the products are written on right hand side. ठीक है, and in between them also a plus sign is shown. ठीक है बेटा, that जैसे कि हमने अभी बात करी कि वर्ड इक्वेशन शो करते हैं हम चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को करने के लिए, और रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं. एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो उनके बीच में भी प्लस का साइन आएगा, जबकि जो एरो होती है वो हमेशा क्या करती है, दैट टेल अस कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में आपका प्रोसीड कर रही है. ठीक है, सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है. सो ऑब्वियसली either there is a change in state take place. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिएक्शन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने एक कैंडल ली, कैंडल को बर्न किया, सो यू कैन सी हियर वैक्स जो थी वो सॉलिड हुई. ठीक है, एंड ग्रेजुअली व्हेन इट स्टार्ट्स बर्निंग, देन इट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग, वैक्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सो हियर द चेंज इन स्टेट इज टेक प्लेस. ठीक है ना, सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो गया, लिक्विड में हो गया. और केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो विक थी, ये विक थी, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दी एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ केमिकल
reaction. If we are talking about the next one observation कि कब हम कह सकते हैं कि एक chemical reaction हो रही है, so that is about change in color. तो अगर बात करते हैं, for example हमने KMnO4 लिया, it is better of a purple color. KMnO4 का जो अपना कलर होता है वो डार्क पर्पल होता है. And when we add a lemon juice in it, अब लेमन जूस क्या है आपका एसिडिक नेचर है और ये एक ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो क्या होगा कि जो कलर होगा KMnO4 का, इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स चेंजेस, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट उसमें आ जाएगा. सो हियर वी कैन सी दैट देयर इज change in color observed and there is a reaction in between the KMnO4 and lemon juice. ठीक है, lemon juice में citric acid होता है which reacts with the KMnO4 and due to which the change in color observed. So this is also a type of a chemical reaction. Third one we can say that evolution of a gas. कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो इसमें तो बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हैं आप लोग. इवन वी did it in our labs also, like when we take a dilute, please just have a look here. जब हम dilute H2SO4 लेते हैं और अगर हम बात कर रहे हैं dilute H2SO4 की, ये देखिए, या dilute HCl ले लिया यहाँ पे, इस एक बीकर में हमने क्या लिया है बेटा, यहाँ देखो, ये इसके अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और फिर उसके अंदर ऐड किए few zinc granules. Then we will observe after stirring it that it start evolving hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस के क्या बनने लगे, बबल्स आने लगे. So there is a evolution of a gas take place and Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. So this is a chemical reaction observed here. The another one we can say that when a change in temperature is observed. So you can see, you can when add a zinc granule in a dilute sulfuric acid, then if you touch the test tube, this reaction is highly exothermic. Yeah, it evolves a huge amount of heat. So a change in temperature is about. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इन चार स्टेट्स में जनरली चार ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो वहां वहां पर क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है साइंस. जैसा कि हमने बात करी कि क्या क्या हो सकते हैं कि कब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है. ईदर चेंज इन कलर टेक प्लेस एज यू कैन सी. ठीक है, हमने जैसा एग्जाम्पल अभी बताया, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और चेंज इन स्टेट हो सकता है. ठीक है, सो इन चारों में ही अगर कोई ऑब्जर्वेशन होती है, सो दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स. ऑलराइट, नाउ हमने जैसे बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं या जिस फॉर्म का यूज करते हैं उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन. फाइन, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ description of a chemical reaction, that is a chemical equation. ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में, इन विच a reactants should be written on the left hand side and the product should be written on the right hand side, और जो एरो होती है वो इनके मिड में होती है. सो द एरो शोज कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है. ओके बच्चे, नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं केमिकल इक्वेशंस के, हमें क्या क्या पता होना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए. So the first one thing which we should know that equation must represent known facts. मतलब कि आपका इक्वेशन के अंदर ये पता होना चाहिए कि जो मेरे रिएक्टेंट है और जो मेरे प्रोडक्ट है उनकी स्टेट क्या है.
ठीक है, वो लिक्विड में है, वो सॉलिड में है, वो गैसियस स्टेट में है। सो उनके बारे में हमें हर एक जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है और जो भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है उनके बारे में हमें ये चीज पता होनी चाहिए दैट exactly what state, in what phase they are, that is present, and what is else are present or important to for that substance to take place a reaction, yet to participate in a reaction. ठीक है, next one, equation के अंदर that should contain the correct formulas for reactants and प्रोडक्ट्स। तो इक्वेशन के अंदर बेटा, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला ही गलत लिख दूंगी, सपोज मुझे लिखना था कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड इफ आई हैव रिटन राइट डाउन CaCl3 और CaCl4 या CCl4, तो मीनिंग इज कंप्लीटली चेंज। पता ही नहीं चलेगा कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कह रहे हो, मैं CCl4 लिख गई गलती से और बनना था वहां पे CaCl2। So that is completely what? It is completely wrong one. So it is necessary to write down the correct formula for the reactant and the product. The last one and very important one is the law of conservation of mass should be satisfied. माने कि the total mass of the reactant and is equal to the total mass of the product. तो ये तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही चीज नहीं होगी तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स मास ही वेरी करता है तो इसका मतलब द रिएक्शन इज नॉट करेक्टेड वन। ठीक है, सो दीज थ्री फैक्ट्स और दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने अभी बात करी दैट शोइंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशंस, तो मैंने कहा भी था आपको कि फेजेस जरूर पता होने चाहिए कि हमारी केमिकल इक्वेशन में क्या क्या फेज है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, एज यू कैन सी वाटर, here it is present in solid. When it is heated, this delta is for heating. ये डेल्टा साइन किसका है, हीटिंग का। सो यू कैन सी इट कन्वर्टेड इनटू liquid water, and when it is further heated it converted into water vapor. So simply we can say that solid phase क्या है आपका बच्चे, that is that the when a substance is relatively comparatively rigid and has a definite volume and shape. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के लिए हम सॉलिड लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिखेंगे। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इवन अगर हम KMnO4 के क्रिस्टल्स लेते हैं तो तब सॉलिड लिखते हैं। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर कोई चीज आपकी सॉलिड इस फेज में एग्जिस्ट कर रही है तो यू विल राइट डाउन देयर सॉलिड। जैसे कि यहाँ पे वाटर सॉलिड लिखा है तो इट इज फॉर आइस बेसिकली। If we are talking about the liquid phase, then the liquid phase which is having a definite volume and which is able to change its shape by flowing. For example, water है आपका, ठीक है, इथेनॉल है, लिक्विड में यूजुअली पाया जाता है या अकर करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका gaseous phase. So gaseous phase which is not having any definite volume nor a shape. So it is shows a little response to gravity. For example, chlorine gas, carbon dioxide gas, nitrogen if you are writing, hydrogen if you are writing, then all of these things you have to write down in gaseous one form. So whenever we want to show the phases in chemical equation, we have to write down, put a bracket and then write down the state over there. Okay, next and the last one, that is the chemical equation. So it is written by the reactants which are existing before a chemical change or a reaction which take place, the products which is the new substance formed as I have told you,
during the chemical changes, and the chemical equation is that which indicate the reactions and products of a reaction. Okay बेटा, so today हमने सिर्फ we studied about only that what is a chemical reaction, how a chemical equations can be represented, हमारे phases क्या important है, characteristics of a chemical equations क्या है. So till then, goodbye. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे. Thank you.